सुर जो है वो 7 होते हैं जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि 8 होते हैं 8वां सुर जो है वो साइलेंस है उसका जो एक आपका जो इम्पैक्ट आता है ना Right. that has its own musical impact. Oh, तेरा चेहरा जब नजर आए. Is it true कि साथिया का जब गाना बन रहा था उड़ी उड़ी आपका गला वाकई में खराब था? Yeah, that's true. Hey, उड़ी उड़ी उड़ी. Hey, ये एक्चुअली मेरी आवाज उस वक्त ऐसी ही थी. अब मुसीबत मेरे लिए ये आ जाती है कि अब जब मैं स्टेज पे गाता हूँ तो I have to now create that voice. Tell us about your transformation journey. Losing 130 kgs at one stretch in the year 2006. मैं ये कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि मैं वाकई इतना वजन कम कर पाऊंगा कि नहीं. तो I had to just take baby steps. I had to follow a very strict diet. Luckily, I managed to keep it going. मैं तो सोच रहा हूँ आपका वार्डरोब पे कितना चेंज हुआ होगा? Of course, completely. My waist used to be 81. मैं आज भी देखता हूँ अपने वो उन पुरानी चीजों को देखता हूँ. Wow. Do you have that? एक तो मुझे सुवेनियर के तौर पे रखना बनता है ना. हाय, मैं हूं अदनान सामी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा. Speaking particularly about this song, and I have to tell you this, that you are the master not just of composing music, but the beats that you put in every track has got such a different feel to it. अगर हम खास तौर से तेरा चेहरा की बात करें, और when we move on to even चोरी चोरी from Lucky No Time for Love with you going yeah. But इस गाने में खूबसूरती उस साइलेंस में है जब आप उस धुन को रोकते हो और फिर गाते हो. I'm not sure if I'm able to explain it as much as I've enjoyed listening to it, but there's that silence that comes in. That you see, I always say सुर जो है वो 7 होते हैं मैं हमेशा कहता हूँ कि 8 होते हैं 8वां सुर जो है वो साइलेंस है. ये कह दिया आपने, यही मैं कहना चाहती थी. आपने बस मतलब क्योंकि उसमें जो इम्पैक्ट आता है ना, वो जो खालीपन में जो वैक्यूम जो आता है उसका जो एक आपका जो इम्पैक्ट आता है ना, that has its own musical impact, which is something that you cannot even explain कि वो क्या था. लेकिन वो एक तरह की कशिश है, एक तरह का नशा है जो वो लाता है. And I love to play with that at times. I love to bring in the offbeat, suddenly sort of take you off guard. Right. True. Because I mean, yes, it's great to have that one pulse that is going on, etc. But it's sometimes nice to just break it off because then that immediately sort of disrupts your entire rhythm. And sometimes it does it in a good way, and so I like to play with that, and so I'm glad that you felt that. I also feel that you also give equal importance to every instrument. Like the guitar is so beautiful in it. There's percussions that are playing beautifully. Everything comes together and just creates that magic. मेरे ख्याल में उसकी वजह ये है क्योंकि I'm a musician first. I mean, I first consider myself a pianist. Then I consider myself a music composer, and then I consider myself a singer. So therefore, जो मेरे लिए जो अहमियत म्यूजिक और म्यूजिशियंस की है और उनके इंस्ट्रूमेंट्स की है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि I don't just want to have an instrument या शामिल बाजा रख दो. It's like if I'm having a guitar there, it needs to justify why it's there. Right. And even if it means for 2 bars. There's one string that I can hear. I want that guitar to come out and let you know कि मैं इसलिए इधर हूँ. मैं वैसे ही जगह को भर नहीं रहा हूँ. मेरा काम ये है, अब आपने ये समझ लिया, अब मैं वापस चला जाता हूँ अपनी जगह पे. You understand what I'm saying? Wow. So that is what the point is. Not कि आपने डाल दिया और आपने उसको बोला कि नहीं तुम पीछे ही रहना. अगले बंदा जो सुन रहा है उसको एक कलेक्टिव आवाज आ रही है, उसको ये नहीं पता कि यार वो बंदा वहां पे गिटार क्या बजा रहा है वो. हाँ ठीक है भर गया है लेकिन वो बजा क्या रहा है. तो चाहे वो 4 सेकंड के लिए क्यों ना हो, उसका इम्पैक्ट आना चाहिए कि भाई ये मैं करता हूँ, मैं ये मेरा रोल है इस गाने में और ये मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं वापस जाके
मैं वो बजाऊंगा. And so that is what my purpose is, and that's where I do that. I try to do that with any instrument that comes in the place. Even I do it with the rhythms also. अब for example आप वो चोरी चोरी की बात कर रहे थे. अब उसमें उसका जो rhythm pattern मैंने बनाया था, उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने क्या किया कि मैं सबसे पहले तो मैंने उसका जो कायदा था वो मैंने धीमे धीमे तकिन कताक दिन तकिन कदिन दिन तकिन कता तकिन धीमे धीमे तकिन कताक दिन तकिन दिन दिन तकिन कता तकिन फिर उसका गिटार आता है कि वो तो एक चीज जो है ना वो इंट्रोड्यूस होती है एंड देन the vocal comes in. So the whole idea was to just highlight कि भाई ये इसका जो हर एक गाने का एक यूएसबी होता है, you know. इसमें रिदम का एक खास तौर पे एक खास जगह थी, तो I wanted to highlight that. And so therefore everybody today who talks about, for example, Chori Chori, they will turn around and they'll say, you know, that song that's what I wanted, you know? Lovely. You know? So let's get back to that beautiful माहौल. चेहरे पर एक खूबसूरत सा गाना आता है, सुनते हैं इस गाने को. आसमां झुक जाए तेरा चेहरा जब नजर आए ओ तेरा चेहरा जब नजर आए ये ज़मीन रुक जाए आसमां झुक जाए तेरा चेहरा जब नजर आए ओ तेरा चेहरा जब नजर आए ओ ओ ओ ओ क्या कर रहे हैं आप? मैंने गा रहा हूँ. It's becoming so difficult for me to concentrate. This is beautiful. आज वैसे मेरा गला खराब है. अरे ये तो सुनना ही. ये तो सुनना बड़ा जरूरी होता है. ये तो सुनना जरूरी होता है. ये बड़ा जरूरी होता है. I don't think I've ever had an interview where the artist has not said that. हाँ जिस तरह गला. लेकिन देखो मतलब कि मेरा तो जेन्युइन है ना. अच्छा, क्योंकि आपने क्योंकि गला खराब की बात की, ये बताएं, हमारे एक इंटरव्यू में शायद आपने कहा था, प्लीज रिमाइंड मी इफ आई एम रॉन्ग, इज इट ट्रू कि साथिया का जब गाना बन रहा था उड़ी उड़ी, आपका गला वाकई में खराब था? Yeah, that's true, absolutely. I remember. Well done. Actually, I had gone to Chennai. अचानक जब मैं वहाँ पे शाम को लैंड हुआ तो there was a quick change in weather जो मेरे नाजुक मिजाज गले को लग गया और लग गया। तो बस उसके बाद फिर मैं बस बहुत ज़्यादा अपनी तबीयत जो थी वो ख़राब हो गई थी। तो हाँ बिल्कुल, तो मैंने फिर I spoke to Rahman on the phone. I said, listen, I think my voice is not doing well. I've got a bit of a congestion in my throat and lungs and all that. तो उन्होंने कहा कि you know, why don't you just come over and we'll just jam, and अगर आज नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, okay fine. So I mean so we met up that evening. Okay. And वहाँ पर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं माइक के सामने वैसे ही ऐਵੇਂ ही चला जाता हूँ, you know, that kind of a space. So I just started singing it, and you know, Rahman was there, and Shad Ali was the director of Satya, the movie, was there. And both of them turned around and said that, you know, this is sounding absolutely fantastic. And मैं तो लियो हूँ, मुझे जब लियो को अगर आपको तारीफ की जाती है तो वो तो आसमान पे चढ़ जाता है। उन्होंने कहा अच्छा और करो, तो मैंने फिर वो कर दिया जोश में। अब वो जो टेक्सचर आपको सुनने को मिलता है as a recording, it is actually because, you know, that whole hey udi 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 hey, ये actually मेरी आवाज उस वक्त ऐसी ही थी. I was not trying to be sexy,
You know, it was just the way it was. You know, मतलब वो जो texture वो था जो texture था वो naturally आ रहा था naturally. because of the fact that my voice was actually in a pretty bad state. But still, it has so many high notes. How did you manage that? I just वो हो गया, you know. I mean, it just happened. So now अच्छा लोगों ने जब उसको सुना, people loved it and so on and so forth. It was wonderful. लेकिन अब मुसीबत मेरे लिए ये आ जाती है कि अब जब मैं स्टेज पे गाता हूँ तो आई हैव टू नाउ क्रिएट दैट वॉइस, वरना अगर मैं उसको ए उड़ी उड़ी वो इम्पैक्ट नहीं है ना उसका, यू नो. सो आई हैव टू देन क्रिएट दैट. तो उसमें काफी खराश जो है वो मुझे बनानी पड़ती है एज अपोज टू दैट टाइम जो नेचुरली निकल रही थी. एक एग्जांपल दे दो. ए उड़ी 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 ए खाबों की पूरी ए अंग रंग घेरी ए सारी रात हो रे. Wow. So, you know, wow. so I have to create it, you know, as तो opposed to. उस वक्त का जो माहौल था वो अब आपको रिक्रिएट मुझे रिक्रिएट करना पड़ता है, you know. उस वक्त जब मैंने बनाया था तो उस वक्त तो it was coming out naturally, आवाज ही ऐसी थी. But you know, such is life. Sometimes we have these what you call wonderful accidents. I think you're a performer. Yeah, Would I you am. agree that, like, you know, which is Yes. why it really helps because you can take any you can mold into anything. Yeah. So, I mean, the thing is, I've grown up so much on stage. जी. I've done so much of stuff on stage. Now, for example, even today, I like to do everything live. I like to do when I perform. I always perform live. Everything is live because I feel that जो आपको इम्पैक्ट लाइव में मिलता है, जो ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन जो आपको मिलता है, वो कभी भी प्री रिकॉर्डेड चीज से आपको कभी नहीं मिलेगा. You know, I mean, you'll get the beats, you'll get all that, but you will never get that impact. Correct. That you get. The soul comes out when it's live. So that's why the whole element of performance is sort of ingrained in my system because I've been performing since I was very young. You know, so I enjoy performing. And तालीम कितनी इम्पोर्टेंट रही है आपके लिए? Very important. क्योंकि आपने बहुत सारे दिग्गजों से तालीम ली है. Some of them we have seen in your house and, on the walls. You see, it's very interesting क्योंकि I don't come from a musical family or even the entertainment family whatsoever. मेरा जो खानदान है उनका कोई ताल्लुक entertainment से जुड़ा दूर से नहीं है. My father was my grandfather was from Afghanistan. My great grandfather was from Afghanistan. He was governor of 4 provinces from there. We belonged to King Amanullah Khan's family. And then my father became, you know, I mean, he was short for a brief period. He was in the Air Force, and then after that, he was a diplomat, right. And he was ambassador to 14 countries. तो उन्होंने जब देखा कि भाई इसका तो ध्यान इस तरफ है, तो उन्होंने कहा मुझे बड़ा सीधा उन्होंने कहा, listen, I love what you do, I love your music, and I'm going to support you, but I don't know anything about this business. So for my sake, so I can't guide you, and neither can I, you know, push you in any direction. I don't know anybody. So all I can just say is that look, I'll support you in your passion, but just get yourself a solid education because all I've heard is कि ये बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है और बहुत कम लोग इसमें कामयाब होते. तो अगर किसी वजह से खुदा ना खास्ता अगर तुम कामयाब नहीं होते तो you should have a backup profession. But I'll support you. तो ये एक हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई. तो मैंने फिर उन्होंने मुझे he sent me to the best of education in England and everywhere, and I became a lawyer, and then I became, you know, a barrister from England, and but then I said कि, you know, music is my calling, and he said, okay, now that you've done your education, do whatever you want, pursue your passion, and so I did, and here I am. Thank God. I think we should take a moment to appreciate parents such as yours and to all those who are watching us and are supporting their kids in whatever they want to do. This is so important. I will say one thing. Even if you are a musician, no matter what profession you may be in, I think education, मैं सबको ये कहता हूँ कि भाई जो मर्जी आप करो, get yourself an education. क्योंकि क्या है कि education जो है वो आपके दिमाग को खोलती है. बिल्कुल. आपके horizons को बढ़ाती है. मतलब कि it gives you a far greater insight towards the world, and it will help you in your profession as well. True. You know. True. And so today, I really feel that you know,
the education that I had while growing up has played an enormous role in my life today, from every aspect. So I would always encourage parents to encourage their kids' passion, and I would tell the kids to also complete their education, and because it's equally important, So that's one of my ज्ञान. Tell us about your transformation journey. Oh gosh. मैं तो ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके आधार कार्ड, पासपोर्ट पे जो फोटो है, उससे आपको पहचाना जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन कभी-कभी ऐसा ज़रूर होता है. अब तो खैर मेरे पासपोर्ट्स की और जो आधार कार्ड्स हैं, उन सब की फ़ोटोग्राफ्स जो हैं अब करंट हो गई हैं. हाँ. लेकिन उससे पहले जो फ़ोटोग्राफ्स थी, उसमें मुझे खासी तकलीफ़ कभी-कभी होती थी कि इमिग्रेशन में फ़ोटो पासपोर्ट में एक और शख्स की देखते थे, फिर मेरी तरफ देखते थे, वो कहते थे कि ये तो no, it's not. I remember a few years ago, I was entering the US and they had a problem. और वो अक्सर ज़्यादा पैरानॉइड से होते हैं, तो उनको मुझे बाकायदा गूगल में जाकर दिखाना पड़ा कि look, I am the same person. Look, there are all these articles about me about having lost weight. So then when they saw the before, after and all that, they said, yeah, it's the same guy. But losing 130 kgs at one stretch in the year 2006, how did you manage that? Was that a conscious effort? I mean, of course, it was a conscious effort. लेकिन आप जब 230 किलो होते हो ना, उस वक्त आप ये तस्वीर भी नहीं कर सकते कि भाई हाँ भाई मैं तो मेरी चाय को रखना, मैं तो 130 किलो कम करके आता हूँ. You never do that. You have no idea how much you will actually lose. Because देखिए हकीकत ये है कि उससे पहले मैंने बहुत कोशिश की थी वेट लूज करने की, लेकिन नहीं हो पाया. किसी न किसी वजह से शायद मेरी डिटर्मिनेशन शायद उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि कभी-कभी 10 किलो कम हो जाता था, कभी 5 किलो हो जाता था, फिर उसके बाद मैं चीटिंग शुरू कर देता था और व्हाटएवर. तो इसलिए मैं ये कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि मैं वाकई इतना वजन कम कर पाऊंगा कि नहीं. तो आई हैड टू जस्ट टेक बेबी स्टेप्स, टेक इट एज इट केम, एंड करते अचानक जब पूरी चीज़ को जब आपने उसका इम्पैक्ट देखा तो देखा कि भाई अल्टीमेटली 130 किलो मैंने कम कर दिए. So it was a process. It wasn't like you went cold turkey and no. I mean I had to go cold turkey in the sense. I mean I had to follow a very strict diet. Okay. I mean I was no bread, no rice, no sugar, no oil, no alcohol. I mean it was all out of my diet. I could have high protein. I could have as much, boiled meat and all those vegetables which were on the protein side. I could have dal and so on and so forth. But none of these things I could have. Okay. So it was not easy, but it was a question of just adapting yourself to a new lifestyle, and luckily I managed to keep it going. जिसकी वजह से 130 हुआ, वरना मैंने कभी उस तरह से प्लान नहीं किया था. और मुझे खुद, अगर आप मुझे उस वक्त कहते कि भाई 130 किलो कम करना है आपने, तो मैं कहता कि सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि मैं ऐसा करूं. क्योंकि आप कभी भी इस चीज़ को, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी मैंने 30 किलो कम करना है, मैंने 10 किलो कम करना है, भाई मैं 5 किलो मुझे कम करने, उनके टारगेट्स होते हैं. मेरे लिए तो पहाड़ था. तो मैंने कहा कि यार इससे पहले कि मैं अपना टारगेट दूं, जिसको मैं देखूंगा, अगर मैं बोलूंगा कि भाई अभी मुझे 130 किलो कम करने या 50 किलो 150 करने या जो भी, अगर मैं उसको दिमाग में रख लूंगा तो मैं तो वहीं पे गिर जाऊंगा. मैं सोचूंगा कि ये नामुमकिन होगा. मैं तो सोच रहा हूँ आपका वार्डरोब पे कितना चेंज हुआ होगा. Of course, completely. My waist used to be 81. Can you imagine? 81. मैं आज भी देखता हूँ अपने वो उन पुरानी चीजों को, wow. Do you have them? एक तो मुझे सुवेनियर के तौर पे रखना बनता है ना. So I mean, so the point is that I just said to myself कि let's just go step by step. अभी टारगेट बनाओ 10 किलो का, and then try another 10 kilos. फिर ये भी था कि let's get out of the 200 zone and come into the 100 zone. Wow.
But you keep having these transformations. Quite recently, we saw another one where your photo was all over swimming pool ka photo, and everybody's like, "Who is this person? This is not Adnan Sami." You see, the thing is, weight is a yo-yo. It's never like this. Yeah. So suddenly you lose a little bit of weight, then you put on a little bit of weight, then you lose. It's never a consistent. It's not a straight line. So this constantly happens. तो इस तरह से ये चीजें होती रहती हैं और आगे भी होती रहेंगी. तो this is a part and parcel of my life. But are you following a diet right now? कुछ लोग होते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं. मतलब कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में कम वक्त लोग कौन है ये जो नेगेटिव पीपल गंदे किस्म के लोग डोंट लाइक दिस नेगेटिव जो मतलब कि पूरा घोड़ा खा जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता. मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है तुम्हारा whatever. So the point is कि उस तरह के बड़े गंदे किस्म के लोग हैं जिंदगी में, तो उनका कुछ भी नहीं होता. वो चाहे पूरा हाथी क्यों ना खा ले, उनका कुछ नहीं होने वाला. और कुछ लोग होते हैं जिसे पंजाबी कहते हैं कि 8:30 से तो क्यों भी पानी है. So for them, for some people, even a little bit of extra oil or whatever will have an impact on them. So and people, for example, me, I was already told that listen, you're always going to have this issue. Right. So you're gonna go up some, you're gonna go down, you're gonna go up, you're gonna go down. So I mean, it's part of my life. So I've learned to live with it. So are you maintaining a diet or something like that? तो मेरा अब you see now I have gone into a zone जहाँ पे मैं अपने आप को किसी चीज से डिप्राइव नहीं करता, लेकिन मैं उस तरह से लूट भी नहीं मचाता. इन द सेंस कि मैं चखूंगा सब चीजों को, लेकिन उनके ऊपर टूट नहीं पड़ूंगा. पहले ये होता था कि बिरयानी आती थी तो मैं उसकी देग तक मैं चाट लेता था, उसको खाली कर देता था. अब क्या है कि मैं 2 नवाले खा के मैं कहता यार अच्छी है, कहीं नहीं जाएगी, कल दोबारा भी खा सकते हैं, ये कहीं नहीं जाएगी. तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ यू सी क्या है कि one thing that you cannot do, you cannot change your taste buds. Correct. अब इनको अगर ज़ौक चढ़ गया है तो अब क्या करें? Correct. अगर फिरनी या रबड़ी पसंद आ गई है, अब उनका मतलब कि ज़बान का क्या कसूर है? Correct. अब आप ज़बान को ये तो नहीं कह सकते कि एक काम कर, ये रबड़ी जो है स्किम मिल्क वाली खा ले. वो रबड़ी नहीं होगी ना. तो बेहतर ये है कि इसके बजाय कि आप पूरी डिश खाली कर लो रबड़ी की, आप एक चम्मच खा के अपने इसको सेटिस्फाई कर लो और बोलना कि बेटा कल दोबारा खा लेना एक और स्पून, ये कहीं नहीं जा रही. एंड दैट्स अ फैक्ट. एट द एंड ऑफ द डे it's all a question of your mindset. So I try to keep that balance, and well, you're doing wonders. I feel like every time I meet you, you're a whole different person. And it's so nice that you keep reinventing yourself. I think I think reinvention is a very important part of evolving. Because I think it is very important to keep it keeps you fresh in your mindset also. And it also allows you to explore and discover new things about yourself. Rather than getting stuck into one particular mold and just staying there, I find that would be very boring. Right. So I like to keep it unpredictable, evolving, reinvention. I think that's brilliant. Hi. मैं हूं अदनान समी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा.